Good evening to all of you. This audible, visible, all clear? All clear? सुनी पारुचंदी समस्ते? ओके ठीक अच्छे ताले हम आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करिवा आज टॉपिक अछि हम पाखरे डिस्कस करिया पई टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया टैक्सेशन सिस्टम ऊपर हम डिस्कशन करियो अनेक इंपोर्टेंट टॉपिक लास्ट क्लास रे डिस्कस करछे बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल कम टू नो अबाउट टैक्स डायरेक्ट टैक्स indirect tax importance of taxes ये सब सीखिए now let's first understand what is tax first time बुझिबा tax कहले कोन बुझे कोन now ये definition tax रो कहूची कि tax is a compulsory levy कोन कहूची नहीं ये कहूची कि tax is a compulsory levy everyone join very good नमस्कार गिरिजा नवीन नमस्कार श्रद्धा श्रद्धा very good evening श्रद्धा now you are watching my class okay नवीन नो प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज रे अच्छा धीरे धीरे प्रिपरेशन हबो धीरे धीरे चलियो प्रिपरेशन आस्ते आस्ते चलिबो सब सब्जेक्ट कवर करा जिवो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म रे ये तो सब्सक्रिप्शन नहीं सारिछ डेली बेसिस रे डीपीपी डीएमपी प्रोवाइड करा जिवो डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करो एमसीक्यू प्रीलिम्स पई डीएमपी क्वेश्चन सॉल्व करो मेंस पई ग्रेजुअली सब क्लास चलिबो प्रीलिम्स पाठ मेंस पाठ इंटरव्यू एवरीथिंग विल बी कवर्ड सब कवर करा जिवो एते ताले टैक्स कोन हम देखियो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स टैक्स कहला हम कोन बुझी नहीं कुछ इट इज अ कंपल्सरी लेवी कंपल्सरी मींस मैंडेटरी लेवी एटा दबा को पड़िबो कोन कहली कंपल्सरी मींस दिस इज अ मैंडेटरी लेवी दबा को पड़िबो तो ता बदल रे सरकार हमको कोन देयर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रोक्वो अर्थ होची ता बदल रे कोन कहबी क्विड प्रोक्वो अर्थ कोन ता बदल रे डायरेक्टली हमको किछि मिले नाही दैट इज कॉल्ड टैक्स आउथर कोच कंपल्सरी लेवी पेएबल बाय हुम पेएबल बाय द इकोनॉमिक यूनिट किए ना हु प्रोड्यूसेस जे प्रोडक्शन करे ताको कहू हम इकोनॉमिक यूनिट टू द गवर्नमेंट किए कहा को दउची ना प्रोड्यूसर दउची कहा को ना प्रोड्यूसर दउची गवर्नमेंट को कहा को कोन कहली एडी प्रोड्यूसर दउची गवर्नमेंट को एवं ता बदल जति मन कर 5 टका देला टैक्स 10 टका 20 टका 50 टका व्हाटएवर यू गिव एज टैक्स देयर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रो ता बदल रे डायरेक्टली तुमको किछि मिलिबो नाही बुझियला फर्स्ट टैक्स कोन बुझियला सिंपल मीनिंग ऑफ टैक्स कोन कहू नवीन सेटा सब करूची किंतु आई हैव सम सीरियस प्रॉब्लम सर बुझी पारुनी केमिति कोन करबी आपन को सह टिके देख कथा पई चाहूची 5 मिनिट समय दियंतु नो प्रॉब्लम नवीन व्यस्त होनी इंटरेक्शन पाई हमर टेलीग्राम लाइव आसे प्लीज जॉइन टू आवर टेलीग्राम चैनल हमर टेलीग्राम चैनल आपण जॉइन करंतु पीडब्ल्यू ओपीएससी रो सेठी टेलीग्राम लाइव आसीओ मोर टेलीग्राम लाइव रे मु लाइव आसीबी एंड डायरेक्टली यू कैन इंटरेक्ट विथ मी जहां भी जहार डाउट अछि एनीथिंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिपरेशन यू कैन रेज देयर एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स तो सही सेशन रे से सेशन एक्सक्लूसिवली डिजाइन करा जायछि कोन पई ना आपण मानकर क्वेरीज को कैटर करिया पई क्वेरीज को रिजॉल्व करिया पई तो समस्ते सेठी जॉइन करंतु टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु जो लाइव आसीबी गोटे दु दिन नेक्स्ट वीक रे काली तो संडे अछि संडे नहीं मंडे तो छुट्टी ट्यूसडे और नेक्स्ट वीक डेफिनेटली आई विल कम लाइव यू कैन रेज ऑल योर क्वेश्चन सब क्वेश्चन सेठी पचारि परियो समस्त
अदरवाइज जदि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन अच्छी यूट्यूब क्लास रे आरंभ रू बा शेष रू मते पचारिबे मु कहिदेबी एंड को पचारिबे मु कहिदेबी सर्व सक्षम ओसीएस ओपीएस 2025 बैच सब हबो डोंट वरी जहाँ जहाँ बाकी थी सब पाठ पढ़ा जाऊ तो पूरा पैकेज पूरा कोर्स कंप्लीट करा दियो व्यस्त होनी ता पई पूरा कोर्स कंप्लीट करा दियो जो जो पार्ट बाकी थी से पार्ट सब आम कवर करियो व्यस्त होनी ता पई किछ ठीक अछि ना एटी कहली कोन इकोनॉमिक यूनिट के ना इकोनॉमिक यूनिट माने जे प्रोडक्शन करूची और हु अर्न्स और हु generates income जे इनकम जनरेट करूची और हु generates income जे इनकम जनरेट करूची बुझेला तो कहले इकोनॉमिक यूनिट सिंपल इकोनॉमिक यूनिट मान सो ये इकोनॉमिक यूनिट ये कौन कहूची पेएबल बाय इकोनॉमिक यूनिट विदाउट एनी डायरेक्ट क्विड प्रो को डायरेक्ट बदल रे किछि मिलिबन तो कहला टैक्स ताले वर्तमान देखियो हम टैक्स रो सिग्निफिकेंस कोन जदि हमको टैक्स मिलुची बा टैक्स दोचे टैक्स रो सिग्निफिकेंस कोन या पई हम गोटे छोटो एग्जांपल लेछि लेट्स से देयर आर टू पर्सन ए एंड बी हैला ए रो इनकम लेट्स से 90000 सॉरी बी रो इनकम 90000 ए रो इनकम माने कर 45000 ए रो इनकम 45000 एट देख परथियो समस्ते ए इनकम 45000 बी रो इनकम 90 ताले दी जण को भीतर इनकम बिफोर टैक्स इति गैप केते दी जण को इनकम भीतर ना 90 - 45 इक्वल्स टू 45000 रो गैप केते 45000 टंका रो गैप हो कि नहीं केते टंका रो गैप ना 45000 रो गैप अछि दी जण को भीतर ए और बी भीतर ना बिफोर टैक्स के किछि टैक्स देना लेट्स से एई जगह रे गवर्नमेंट कोन कला ना गवर्नमेंट इंपोज टैक्स मन करो 30% टैक्स दो केते टैक्स रखले ना टैक्स दो 30% टैक्स देले ए केते दबो ना ए 45000 ऊपर 30% दबो 45000 रो 30% दैट इज इक्वल्स टू केते हिजो 12000 13500 बी केते दबो ना बी दबो 90000 रो 30% 90000 रो 30% माने 27000 केते टका दबो 27000 तले ए पाखरे 13500 टका टैक्स देला पर बंचिला केते टका ए पाखरे बंचिला केते ना 31500 बंचिला बी पाखरे बंचिला केते 90000 इनकम 27000 टका टैक्स दे देला तले बंचिला केते ना 63000 now what is the gap here दी जन को या कहै डिस्पोजेबल इनकम now disposable income कोन इनकम माइनस टैक्स इज डिस्पोजेबल इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू डिस्पोजेबल बुझला डिस्पोजेबल इनकम कोन ताले मते को एई जगह रे ए और बी रो डिस्पोजेबल इनकम रे गैप केते समस्त कहबी ए और बी रो डिस्पोजेबल इनकम रे गैप केते समस्त कहबी ए और बी भीतर डिस्पोजेबल इनकम रे गैप केते हला ताले 31000 एटी केते होची 63000 माइनस 31500 तो 31000 गैप हला 31500 एठी देखो गैप केते थिला एठी गैप थिला 45000 एठी गला केते 31500 बुझिला कि नहीं कोन 31500 एठला 31500 तने गैप टा रिड्यूस होईची ना गैप टा इंक्रीज होईची आफ्टर गिविंग टैक्स देला परे गैप टा इंक्रीज हला ना गैप टा रिड्यूस हला गैप रिड्यूस हला कोन हला टैक्स देला परे कोन हला ना गैप रिड्यूस हला गैप रिड्यूस्ड आफ्टर गिविंग टैक्स सो डिस्पोजेबल इनकम भितरे बा मु सिंपली कहबी इनइक्वालिटी रिड्यूस्ड कौन कहबी ना इनइक्वालिटी कौन है ना इनइक्वालिटी रिड्यूस्ड कहाँ का भीतर है ना इनइक्वालिटी रिड्यूस्ड बिटवीन disposable income of A and B disposable income of A and B A और B रो disposable income भितरे inequality reduce हो गला ना जो क्वेश्चन होची कि जो टैक्स अमाउंट किए नेला टैक्स अमाउंट कहाँ पाखु जीवो ना टैक्स अमाउंट विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट
टैक्स अमाउंट गोस टू क्या, टैक्स अमाउंट गोस टू द गवर्नमेंट, हाँ कि नहीं ना, गवर्नमेंट नहीं कि कौन करियो, गवर्नमेंट ताको नहीं कि यूटिलाइज करियो फॉर वेलफेयर, गवर्नमेंट ताको नहीं कौन करियो ना वेलफेयर करियो, रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब यूज करियो ना, ताको यूज के करियो ना ऑल समस्ते वेलफेयर कला पर यूज के करना, इट विल बी यूज बाय पब्लिक, सो पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट हबो, पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट हबो, पब्लिक यूज करियो, बुझिला किए यूज करियो, पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट हबो किए यूज करियो ना पब्लिक यूज करियो, ता माने समस्त को लाभ होला, जे टैक्स देइची ताको भी लाभ, जे टैक्स न देइची ताको भी लाभ, कौन कहल जे टैक्स देइची ताको भी लाभ, जे टैक्स न देइची ताको भी लाभ, क्लियर, ताले टैक्स रो बेनिफिट कोन बुझिला, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टैक्स, क्लियर, ताले टैक्स कोन हम जानि गले, तापर एबे देखियो हम टाइप्स ऑफ टैक्स, रेडी बुझिला, समस्त बुझिले जहा बुझेली, बुझेला ना बुझेना, बुझेला श्रद्धा, वेरी गुड, ओके, देखिए हम इंसिडेंस और इंपैक्ट दीटा जिनस सिंपल भाषा रे बुझिबो, फाइनल रेस्टिंग प्लेस मु एग्जांपल दोउची, एग्जांपल हिसाब रे बुझौची, एग्जांपल 1 इनकम टैक्स, तुम इनकम पाइल, इनकम कल, इनकम ऊपर टैक्स देल, मत देखो ये एटे दीटा कथा, एटा कहा पॉकेट रु बर्डन कहा पॉकेट पड़िला ऊपर पड़ला, बर्डन ऑन हुज पॉकेट, कहा पॉकेट ऊपर बर्डन पड़िला, एंड सेकंड हु पेज टू अथॉरिटी, सेकंड कौन कहली हु पेज टू द अथॉरिटी, दीटा कथा एटी देखियो, इनकम टैक्स बर्डन कहा ऊपर पड़िला मते को, बर्डन माने कहा पॉकेट रु गला, सिंपल कथा ना, इनकम टैक्स रिसिप्टेंट जे इनकम कला ता पॉकेट रु गला, एटा इनकम टैक्स रिसिप्टेंट का पॉकेट रु गला, एटा ना इनकम टैक्स रिसिप्टेंट ना, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, एको बुझो, ए पार्ट को बहुत जन स्टूडेंट बुझी पारंती नाही, तेणु बुझो इनकम टैक्स रिसिप्टेंट ऊपर पड़ला, हु पेज टू द अथॉरिटी ना सेम पर्सन इनकम टैक्स रिसिप्टेंट, ये हु पेज टू द अथॉरिटी ना सेम लोक, मोर इनकम टैक्स कटिला कहा पॉकेट जो मु देवी, पेमेंट किए करियो अथॉरिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मु पेमेंट करिवि, सिंपल, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 हम गोटे होटल गले बा गोटे रेस्टोरेंट गले, से रेस्टोरेंट रे खाइले, रेस्टोरेंट रे खाइला पर से जीएसटी लगेला, तो जीएसटी रे बर्डन कहा पर पड़िला, बर्डन कहा पर ना जे कंज्यूम कला कंज्यूमर ऊपर पड़िला, कंज्यूमर ऊपर पड़िला ना, हु पेज टू अथॉरिटी, हु पेज टू अथॉरिटी, अथॉरिटी को किए पेमेंट करछि ना, हु पेज टू द अथॉरिटी, ना होटल ओनर रेस्टोरेंट ओनर किए पेमेंट करछि ना, रेस्टोरेंट ओनर पेमेंट करछि, हां कि नहीं, तो ये दीटा लोग सेम ना डिफरेंट लोग ना, दीटा जाक डिफरेंट लोग, ये दीटा जाक सेम ना डिफरेंट लोग, ये दीटा जाक सेम लोग, हां ये दीटा जाक होते सेम लोग, ये दीटा जाक होते कोन ना डिफरेंट, दिस टू आर सेम, दिस टू आर डिफरेंट, दिस टू आर सेम एंड दिस टू आर डिफरेंट, ठीक है बुझियो मन दे, जेते बेले सेम लोक ऊपर एटा कह जाय कोन, एटाला इंपैक्ट ऑफ इंसिडेंस, कहबी इंपैक्ट इंसिडेंस कोन माने कहार पॉकेट रु गला एवं अथॉरिटी को पेमेंट कला, एठी देखले सेम लोक, एठी कहार पॉकेट रु गला एवं कहार अथॉरिटी को पेमेंट कला, एठी देखला हम कोन दिस इज डिफरेंट पर्सन, कोन देखले दिस इज डिफरेंट पर्सन, सो इंसिडेंस कोन ना फाइनल रेस्टिंग प्लेस, हु बियर्स इट, बा मु जोटा कहली बर्डन कहा पॉकेट ऊपर पड़िला, कोन कहली बर्डन कहा पॉकेट ऊपर पड़िला, हला बुझिला, बुझिला कि नहीं, बर्डन कहा पॉकेट ऊपर पड़िला ना, एठी इंपैक्ट रे कोन देखिले, हु पेज द टैक्स टू अथॉरिटी, अथॉरिटी को किए पेमेंट कला, हु पेज टू अथॉरिटी, तो एटा रेस्पोंसिबिलिटी कहार पेमेंट करबा ना, एठी इनकम टैक्स केस देखले इनकम टैक्स रिसिप्टेंट, एठी देखुचे हमें कहा पर ना सेलर ऊपर पड़ला, तो इंसिडेंस हला कोन बुझिला कि नहीं, इंसिडेंस सिंपली मन रख, इंसिडेंस इज द बर्डन बा कहा पॉकेट ऊपर इंपैक्ट, इंसिडेंस पड़ला इंपैक्ट कोन, इंपैक्ट इज द रेस्पोंसिबिलिटी, इंपैक्ट कोन
ना impact is the responsibility simply who pays to the government, who pays to the authority means who authority means the government, who pays to the government. मो कथा बुझेला क्लैरिटी आसिला ना नहीं दुटा जाक कथा समस्त बुझी पारले कि नहीं बुझी गला इजीली ताले इंसिडेंट्स मो पॉइंट होची वर्तमान if incidence and impact is on same person, if incidence and impact is on same person ताल ताको कहूचे कोन ना डायरेक्ट टैक्स. If it is on different person then this is called indirect tax. ताले different person नो एग्जांपल हमें नवा करना जीएसटी रे पड़िला. डायरेक्ट टैक्स रे हमें देखले कोन इनकम टैक्स. डायरेक्ट टैक्स रे देखले इनकम टैक्स. ताले बुझेला what is direct tax and what is indirect tax. So incidence and impact both at same point or the person who is hit same person bleed. जी बाड़े गेला ताटू रक्त बाहर हां कि नहीं. तो in example income tax, interest tax, it incidence and impact both at different point. Person who is hit same person doesn't bleed. Example sales tax, excise tax, GST, ये सब बोले कौन ना, these are called indirect taxes. These are called indirect taxes. एवं ये when both are same person they are called what? They are called direct taxes. कौन करे कौन कहले आको ना कहले डायरेक्ट टैक्स. बुझला व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. बहुत इंपोर्टेंट ये आसीबो क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आसीबो डायरेक्ट टैक्स कोन है और इनडायरेक्ट टैक्स कोन. जति को इंपोर्टेंट पॉइंट अछि रिलेटेड सब कहि. ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स विल कवर. हैला बुझेला. नेक्स्ट पॉइंट को जीवा. नेक्स्ट पॉइंट को जीवा डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ टैक्सेशन. माने करो देयर आर 3 पर्सन ए बी सी. माने करो ए रो इनकम 50,000, बी रो इनकम लाखे, सी रो इनकम 2 लाख. हैला. सो इट देखिए हमें टैक्स रेट केते ए ऊपर पड़िला लेट से 10% टैक्स. ये कहला बी तो ताठू अधिक इनकम करूची, बी ऊपर आउ टैक्स बढ़ाओ 20% पकाओ. सी तो आहुरी अधिक करूची तापर आहुरी अधिक इनकम टैक्स पकाओ 30% पकाओ. हैला. इटी बी आउ सी कहले कि हम जदी अधिक इनकम टैक्स पड़िबो ताले हम इनकम करिवो, इनकम करिया कमई दो. ये कहला ए ऊपर जदी 10% इनकम लोक करंतु अधिक लोक को एनकरेज करिया पई इनकम करिया पई कोन करा हला ना इनकम ऊपर टैक्स उडा को कमी दिया. ये दबो 10%, जदी ये अधिक इनकम कला 8% दबो, ये आउ अधिक इनकम कला ये 7% दबो. सो टैक्स रेट ता एठी कमउची काहेकि ना टू एनकरेज पीपल टू अर्न मोर. आउ गोटे सिस्टम रहला जोटी सबुटी समान, ये जति कि दबो 10%, ये दबो 10%, ये भी दबो 10%. हैला. तो एटा को कहवा जाय प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम. This is called proportional taxation system. इति जोटी बढ़ी बढ़ी चलीला टैक्स रेट ता ताको कहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. जोटी कमिला ताको कहला रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. बुझिला. जोटी सेम गोटे जगह पूरा सेम समस्त 10%, 10%, 10%, 10%, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल. नाउ इनकम बढ़िया सहित एटा कमिला, दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव. इनकम बढ़िया सहित एटा बढ़िला, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव. बुझिला व्हाट इज प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल. कोन कहली प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम. क्लियर क्लियर कि नहीं. वेरी गुड. समस्त बुझी गले ताले पीहू बुझी गला एंड अदर्स समस्त बुझी. ताले टैक्स रेट अनुसार एटा बुझी गला. आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहि मुटी सेस कोन आ सरचार्ज कोन दिए बुझिया.
सेस कौन आउ सरचार्ज कौन दीज आर टैक्स ऑन टैक्स दीटा जाक दीज आर टैक्स ऑन टैक्स now what is tax on tax मु कहली जने टैक्स देला ताको टैक्स डिसाइड हला टैक्स दबो केते ना ता इनकम 2 लाख वर्ष टका मन कर देला 20000 टका टैक्स ना ये कुछ टैक्स ऊपर आउ पका शेष पके दो 5% ना 20000 रो 5% 1000 टका दो ना कहार टैक्स रो 5% दो जति टका टैक्स ऊपर टैक्स नॉट ऑन होल अमाउंट मु आउ थरे कहू देखो लेट्स से इनकम इज 5 लाख एवं तुम दाटो 5 लाख इनकम रे टैक्स नलो 20000 टका 20000 ऊपर शेष लागिबो 1000 टका बा सरचार्ज लागिबो 5% रे 1000 टका बा सरचार्ज लागिबो 1000 टका हैला तो शेष एंड सरचार्ज व्हाट आर दे आर टैक्स ऑन टैक्स देन व्हाट इज द डिफरेंस शेष हैज अ स्पेसिफिक यूज शेष रो स्पेसिफिक यूज थाए जेमति के मु कहबी स्वच्छ भारत शेष बा मु कहबी एजुकेशन शेष बा मु कहबी ताने एई शेष रु जति टका कलेक्ट हो एजुकेशन शेष रु दैट विल यूटिलाइज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली नाउ स्वच्छ भारत रे जहां इनकम आसीबो दैट विल यूज फॉर स्वच्छ भारत अभियान ओनली नाउ सरचार्ज कोन नो स्पेसिफिक यूज इन सरचार्ज देयर इज नो specific use that is called surcharge बुझेला व्हाट इज सरचार्ज सो सिंपली गवर्नमेंट दैट टैक्स अमाउंट को बढ़ेया पई सरचार्ज इंप्लीमेंट करिथाय कोन कहले गवर्नमेंट दैट टैक्स अमाउंट को बढ़ेया पई सरचार्ज इंप्लीमेंट करथाय क्लियर व्हाट इज सेस एंड व्हाट इज सरचार्ज नो डाउट क्लियर व्हाट इज सेस व्हाट इज सरचार्ज नो डाउट नो डायरेक्ट टैक्स कोन कहली ऑलरेडी incidence and impact on same person or different person incidence and impact on same person incidence and impact जेतबे same person ऊपर हुए त कोजा कोन that is called direct tax clear direct tax रो किछि एग्जांपल टिके दे देबे समस्त direct tax रो एग्जांपल टिके देबे what is the example of direct tax what is the example of direct tax ro example kono yes very good income tax is the example of direct tax सरला कथा okay now देखो tax किए लगे पारे only union government or the state government or only state government or both who can impose tax only union government or only state government or both who can impose tax who can impose tax both both can impose tax ताल देखिबा कोन impose on income union government आनी परियो को टैक्स लगे परियो ना income tax MAT minimum alternate tax corporation tax capital gain tax dividend distribution tax these are the name of taxes which can be imposed by union now state government agricultural income tax state government लगे परियो then professional tax maximum 2500 टका देखियो जो मान सब आईटी सेक्टर रे काम करथियो सॉफ्टवेयर रे so माने अदर स्टेट रे काम करियो महाराष्ट्र रे मुंबई रे कि दिल्ली रे so there will be professional tax now Odisha रे मध्ये जो माने से बाहर काम करथि तांको पर गोटे टैक्स लागियो professional tax if you change state from one state to another state but there is a limit maximum 2500 टंका टैक्स पकेई परिबे not more than 2500 टंका केते वर्ष केते कहली वर्ष को मैक्सिमम केते ने वर्ष को मैक्सिमम 2500 not more than 2500 hela that is called what that is called a state government tax well sorry that is called a professional tax okay then the ye gala by state government now on asset and transaction there are different tax like security transaction tax cash transaction tax these are different tax wealth tax banking cash transaction tax these are different tax now by state government it is land revenue stamp duty property tax urban area lagi pariyo hela
ना कॉर्पोरेशन टैक्स कौन कॉर्पोरेशन टैक्स इज सिंपली लाइक इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स इज सिंपली लाइक इनकम टैक्स बट दिस इज द इनकम फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी इनकम आम इनकम ऊपर जोड़ा लगला दैट इज इनकम टैक्स कंपनी इनकम ऊपर जोड़ा लगला दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स सो दिस इज द नेट इनकम ऑफ अ कंपनी इन अदर वर्ड्स दिस इज कौन बोले इन अदर वर्ड्स दिस इज इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी रो इनकम टैक्स मो कथा बुझी पाले कि नहीं कौन खाली गुरु चुपियो चली तो मो आगे स्टूडेंट व्यू आई हैव 2-3 एक्सेस टू स्टूडेंट व्यू सब चलची नेक्स्ट इक्वलाइजेशन लेवी और गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी बा गूगल टैक्स नो इक्वलाइजेशन लेवी कौन बा गूगल टैक्स कौन ये कॉन्सेप्ट कोठु आसिला मते को यूट्यूब रे जतबे गोटे वीडियो देखुचो वाईटी रे गोटे वीडियो देखुचो गोटे एडवर्टाइजमेंट देखिलो लेट्स ये जो एडवर्टाइजमेंट देखिलो ये एडवर्टाइजमेंट ऊपर यूट्यूब कंपनी इनकम जनरेट कला कि नहीं आड चलेले इनकम जनरेट करिवो ना इनकम जनरेट कले से कोन एठी टैक्स दउची कि ये गवर्नमेंट को एठी किछि टैक्स दउ नथला सेति पई 2016 बजेट रे गवर्नमेंट गोटे टैक्स आनला जानला इक्वलाइजेशन लेवी बाको कोआ जाय गूगल अमेज़न फेसबुक एप्पल टैक्स बोली गूगल अमेज़न फेसबुक एप्पल टैक्स बोली कहला कि कोन मागला ये ना 6% रखले टैक्स रेट इज 6% तो एई कंपनी माने टैक्स देबे कोन करे एई कंपनी माने टैक्स देबे केते बेले टैक्स देबे जेतबे इनकम जनरेट होउची when they are generating income from some other country जेतबे से माने अलगा कंट्री रु इनकम जनरेट करचंदी से मानको ए टैक्स दबा को पड़ो हैला बुझेला तो कहला हम इक्वलाइजेशन then is minimum alternate tax it is less जदी गोटे कंपनी ता प्रॉफिट रो लेस देन 30% लेस देन 30% टैक्स दिए ताल तापर लागियो कोन ना मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बा मैट कोन को जदी 30 लेस देन 30% दिए इंटरेस्ट ताल तापर लागियो कोन ए टैक्स ताल से लागियो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स so it is the other than company then it is MAT alternate AMT is for alternate minimum tax alternate minimum tax बुझिला well this is called alternate minimum tax बुझिला what is alternate minimum दीटा tax गोटेला minimum alternate tax MAT minimum alternate tax आ गोटेला बात कहले कोना MAT आ गोटेला AMT alternate minimum tax बुझिला AMT कोन आ MAT कोन AMT and MAT बुझिला क्लियर क्लियर ओके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एटा कहा पर लागे इट इज ऑन लेविड ऑन शेयर होल्डर्स डिविडेंड शेयर होल्डर डिविडेंड ऊपर एटा लागे दिस इज रेट इज 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज दिस इज द रेट ता को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स शेयर होल्डर डिविडेंड ऊपर जोटा लागे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैपिटल गेन टैक्स ऑन कैपिटल जो कैपिटल एसेट्स लाइक नॉन एग्रीकल्चरल लैंड प्रॉपर्टी ज्वेलरी पेंटिंग हैला शेयर पेंटिंग शेयर ये सब ऊपर जोड़ा लगे तो कोन सीजीटी बा कोन कैपिटल गेन टैक्स कोन कोन दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स देन इनकम टैक्स इट इज imposed on income could impose it is imposed on this is imposed on income हैला एटा केबे आसला जेम्स विलियम आनिले केबे ना 24 जुलाई 1860 रे कोन पाइना टू कंपेंसेट ब्रिटिश लॉस in 1857 revolt 1857 revolt रो लॉस को कंपेंसेट करिया पई कोन कहले 1857 revolt रो लॉस को कंपेंसेट करिया पई आसला कोन ना इनकम टैक्स बुझिला व्हाट इज इनकम टैक्स so this is imposed on income
कोड इम्पोज होछ ना इट इज इम्पोज्ड ऑन इनकम हैला न एबे ताला हमें देखियो डायरेक्ट टैक्स कोन जानिले इनडायरेक्ट टैक्स कोन जानिले मत देखो इनकम टैक्स टा इंडिया रे प्रोग्रेसिव ना रिग्रेसिव ना प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स टा इंडिया रे प्रोग्रेसिव ना रिग्रेसिव ना प्रोपोर्शनल व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया समस्त कहबेटी income tax in India, it is progressive, regressive or proportional? Progressive. डिफरेंस देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भितर डायरेक्ट टैक्स हम देखले कोना टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन डायरेक्ट टैक्स रे टैक्स इज कलेक्टेड एंड लेविड फ्रॉम सेम और डिफरेंट पर्सन डायरेक्ट टैक्स रे इट इज कलेक्टेड एंड लेविड फ्रॉम द सेम पर्सन कोड इट इज कलेक्टेड एंड लेविड फ्रॉम द सेम पर्सन now इठी indirectly it is from different person example हम देखले कोना जीएसटी स्टेट एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी एठी देखिले हम इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स ये सब इंसिडेंस एंड इंपैक्ट it falls on the same person incidence and impact on the same person now this is on the different person incidence and impact on same person it incidence and impact is on different person now what about inflation रे direct tax और indirect tax कोन हवा दरकार now what is inflation first बुझो inflation कोन हम पढिचे पूर्वर गोटे क्लास रे मु कहितली what is inflation के कहि परियो कार मने अछि inflation कोन सिंपली प्राइस हाइक टाको हमें कहूचे इन्फ्लेशन कौन कहूचे प्राइस हाइक टाको कहूचे हमें इन्फ्लेशन हैला मार्केट रे सब दिन प्राइस बढ़ी जाय अच्छा जदी बढ़ी जाए हमें कौन करबा डिस्पोज केते बेल बढ़िला ना डिमांड बढ़िला डिमांड इंक्रीज हला डिमांड अनुसार हम देखले कोन हला ना प्राइस टा बढ़ी गला डिमांड बढ़िले जदी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट if supply remains constant then the कहला कोन price increase कोन कहली डिमांड बढ़िला प्राइस भी बढ़िला काहे ना जदी डिमांड पर सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट डिमांड पर जदी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट ताले कोन हो ना प्राइस पड़ी जो प्राइस पड़ी गला हैला ताले ये डिमांड केते बेले पडुची मते को डिस्पोजेबल इनकम बढ़िले डिमांड पडुची ना कमिले डिमांड पडुची डिस्पोजेबल इनकम बढ़िले डिमांड पडुची हां कि नहीं कोन कहली डिस्पोजेबल इनकम बढ़िले डिमांड पडुची ओ कथा बुझिला डिस्पोजेबल इनकम कोन हेले डिस्पोजेबल इनकम बढ़िले एटी डिमांड बढ़ुची क्लियर ताले डिस्पोजेबल इनकम कमैबा को हेले डायरेक्ट टैक्स कोन करियो बढ़ेबो ना कमेबो अरे डिस्पोजेबल इनकम एटी कमैबा को पड़ियो डिस्पोजेबल इनकम कमैबा को हेले डायरेक्ट टैक्स बढ़ेबो सिंपल कथा ताले कोन करियो पड़ियो ना डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज
डायरेक्ट टैक्स माने टैक्स लाइक इनकम टैक्स हमको इंक्रीज करिया पड़िबो। डायरेक्ट टैक्स कोन हबो ना इंक्रीज करिया पड़िबो। डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कले डिस्पोजेबल इनकम कमिबो। डिस्पोजेबल इनकम कोन हबो ना डिस्पोजेबल इनकम कमिबो। बुझेला डायरेक्ट टैक्स बढ़िले डिस्पोजेबल इनकम कोन हबो ना डिस्पोजेबल इनकम एठी रिड्यूस हो सिंपल जिंस। ताले इटा गला गोटे बुझेल ना व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स को कोन करिया दरकार। व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स को कोन करिया ना मन कर जीएसटी मन कर गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस अछि लेट्स से गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस अछि 100 टका तापरे लगेलो जीएसटी लगेलो 18% ताले केते गेला प्राइस ना 118 ना इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ी के अछि प्राइस कमैबो ये जीएसटी रेट को जदी कमै दवा 10% करिवा ताले जो केतना 110 ताले इनडायरेक्ट टैक्स टा को हमको रिड्यूस करिया पड़ियो कोन करिया पड़ियो ना indirect tax has to be reduced है ना but direct tax has to be increased clear ताले बुझला इन्फ्लेशन समय ताले कोन हो ना इन्फ्लेशन ने डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज एटा कोन करिया पड़ियो इनडायरेक्ट टैक्स डिक्रीज सिंपल कथा एटा आसीबो क्वेश्चन मन रखियो समझ इट कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन ओके आउ केतरा पॉइंट को आसीबी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आसला के ना 2010 डायरेक्ट टैक्स कोड बिल so government of India aimed at simplifying and overhauling country's complex income tax जो हमर वर्तमान चाली छि कोटा यूज होछि ना इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोन कहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 टा को यूज करा होछि ये कहला कंट्रीज कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स स्ट्रक्चर टा को रिड्यूस करो सो द ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्लेस द एक्जिस्टिंग लॉज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड एक्जिस्टिंग लॉ को रिड्यूस करियो कोन करो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड एक्जिस्टिंग लॉ को रिड्यूस करिया पई आसिला ना आर ऑब्जेक्टिव कोन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड the objective is it will simplify the tax law whatever the tax law we have it will simplify सुशील कुमार नमस्कार सुशील बहुत पढ़ी सालु ना हमें आज टैक्सेशन सिस्टम ऊपर डिस्कस करूछु इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स सेस सरचार्ज ये सब अनेक इंपोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चले यू जॉइंड वेरी लेट no problem recording is available recording of this live session is available you can watch it later एबे बुझ परियो एबे जहा पढु छ ताको देख परियो so objective कोन डायरेक्ट टैक्स कोड ना डीटीसी बिल 2010 एम टू अचीव कोन ना फर्स्ट सिंप्लिफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ कोन कोना सिंप्लिफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ फर्स्ट increase the tax compliance माने टैक्स पेमेंट compliance माने कोन ना compliance माने ला टैक्स पेमेंट by simplifying tax structure and making it more transparent the government aim to increase tax compliance government aims to increase tax compliance and expand the tax base सिंपल कथा टैक्स बेस को एक्सपैंड करियो एवं टैक्स कंप्लायंस मींस टैक्स पेमेंट बढ़ियो जो मन टैक्स दउ नांती टैक्स अवॉइडेंस करचोंदी से माने टैक्स पेमेंट करि चलियो कोन करियो से माने टैक्स पेमेंट कर देन इक्विटी एंड फेयरनेस सो यार ऑब्जेक्टिव कोन इट विल ब्रिंग मोर इक्विटी इन द टैक्सेशन सिस्टम
It will bring more equity in the taxation system by rationalizing tax rate and minimizing loopholes that allow tax evasion. So ये tax rate टाको rationalize करियो कुछ unnecessary अधिक tax rate रखियो unnecessary exemption गुड़ा को reduce करियो फालतू रे exemption अधिक tax exemption दवार आवश्यकता नहीं facilitation of economic growth को कौन करियो ना facilitate करियो ना tax बढ़िले automatically economic growth बा welfare state establish हो टैक्स बढ़िले कौन हो ना ऑटोमेटिकली वेलफेयर स्टेट एस्टाब्लिश हो बा इकोनॉमिक ग्रोथ कौन बेटी ना इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टाब्लिश हो अलाइनमेंट विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विथ अदर कंट्रीज विथ अदर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस विथ अदर इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्रीज विथ अदर इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्रीज है अलाइनमेंट विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुझिला Now, ये direct tax code कहीं के आसिलानी कहीं के आपको implement करा गया because this is complex in nature, complex reform, administrative challenges are there. कौन आनला next administrative challenges, changes in political leadership party change गला तुमने NDA सरकार पड़े सला पूर्व UPA सरकार थला UPA सरकार आनी थला direct tax रे change NDA सरकार indirect tax code रे change नहीं आसिला तुमने आनीला कौन GST and all indirect tax code रे कौन आनीला GST and all नहीं आसिला समान introduction of GAR separately, general anti-avoidance tax, anti-avoidance rule, GAR necessary. Fragmented approach, government adopted fragmented approach for tax reform. ये कहला कि at a time गोटे tax code आनिबा अपेक्षा will come with a developed one. धीरे धीरे develop करी करी के आनिबा, धीरे धीरे gradually हमें ताको changes आनिबा. No, not all of sudden changes आनिबा. Okay, now what is the current status and future of DTC? गवर्नमेंट कौन चेंजेस आनी ना गवर्नमेंट चेंज रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% आगु जोटा 22% थिला सेठी एबे कर देला तो 15% टैक्स देबे किए ना कॉर्पोरेट सेक्टर रु गवर्नमेंट बहुत अधिक टैक्स जनरेट करथला जेहेतु एबे कॉर्पोरेट टैक्स कमी जाउची ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रेवेन्यू भी कमी जाउची गवर्नमेंट रेवेन्यू कमिले कोन हबो कोन कहला गवर्नमेंट रेवेन्यू कमिले कोन इंपैक्ट पड़िबो ना तार नेगेटिव इंपैक्ट होउची गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करि परिबो नाही कोन ना गवर्नमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करि परिबो नाही बेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट करि परिबो नाही हैला तो रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट कॉर्पोरेट टैक्स कमी गले ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट रो रेट ता मध्ये कमी जे कोन हो कहली ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट रो रेट मध्ये कमी जे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स बजेट 2020 रे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आसिला सॉरी इट वाज abolished and dividends are now taxed in the hands of shareholder तो सिंप्लिफिकेशन ऑफ टैक्स फाइलिंग ये कहला टैक्स फाइलिंग रो प्रोसेस टाकू सिंप्लीफाई कर दो फेसलेस अपील हैला प्रोसेस टाकू सिंपल कर दो सिंप्लीफाई कर देले कोन हो ना लोकमान को इजी हबो टैक्स फाइल करिया नेक्स्ट टाइम आसे नेक्स्ट टॉपिक प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट ये के आसे 2016 क्वेश्चन आसीओ 2016 प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 दिस इज एन अमेंडेड वर्जन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 यार ऑब्जेक्टिव कोन टू कर्ब इलीगल और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस to reduce benami property transactions so 2016 amendment significantly it strengthened original 1988 act what are the objectives of this act ये act objective benami property transaction act कौन कहूची what are the objectives benami property first ये कहूची to prevent money laundering को prevent करियो कौन करियो money laundering को reduce करो enhance transparency in property ownership जहां ना रे property अछि से रियल ओनर की नहीं कौन कहली जहां ना रे प्रॉपर्टी अछि से रियल ओनर की नहीं सेटा देखियो कौन टैक्स इवेजन को रिड्यूस करियो इट विल पेनलाइज टैक्स इवेजन इट विल पनिश द ऑफेंडर्स कौन करियो ना इट विल पनिश द ऑफेंडर्स बुझिला नाउ ई एक्ट रे देयर आर सम की डेफिनेशंस इन द एक्ट ये एक्ट कौन डेफिनेशन आनुछ कौन डेफिनेशन आनुछ ना कुछ बेनामी ट्रांजैक्शन किए ना जदी गोटे प्रॉपर्टी fictitious name का ना clarity नहीं से ना रे अछि ownership is not aware or the owner denies ownership कुछ ये मोर नुए ये property मना कर दउ person providing the funds cannot be traced जे फंड देई छि ताको ट्रेस करी हो नाही एही जगह मान कर ताको जे बेनामी एक्ट मुझे सॉरी बेनामी ट्रांजैक्शन बोली कोई बेनामीदार के ना द पर्सन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड
जहां ना रे बेनामी प्रॉपर्टी अच्छी तो कहूँ पर्सन हु इज the person who is a benamidar. Now beneficial owner is the person who actually finances or controls the property. जे actually finance दउछि बा control करूछि property को ता कहूँ beneficial owner. बुझिला beneficial owner कौन बुझिला beneficial owner बेनामी प्रॉपर्टी कहले ऑलरेडी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ही पर tangible intangible प्रॉपर्टी ही पर तो ये एक्ट अंडर प्रोसीजर कौन ना इन्वेस्टिगेशन करा जाय परियो इन्वेस्टिगेशन विल बी देयर होला प्रोविजनल अटैचमेंट सीज करि परियो प्रॉपर्टी सीज एडजुडिकेशन ही परियो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हियर्स बोथ द पार्टीज अपील करि परियो ना यू हैव द प्रोसेस फॉर द अपीलेट ट्रिब्यूनल जने अपील करि परियो तले यार इंपैक्ट कोन पडा व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ दिस एक्ट ये एक्ट रे इंपैक्ट पडिला कोन ना ब्लैक मनी कमी गला ब्लैक मनी रिड्यूस हो गला इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी इन रियल एस्टेट रे जोटी अननेसेसरली अधिक इन्वेस्टमेंट करिके मिछ इन्वेस्टमेंट जोटी बेनामी इन्वेस्टमेंट गुडा अधिक होइतला वी डोंट नो द सोर्स फोर्स हमु किछि जाना नै बेनामी इन्वेस्टमेंट जोटी अधिक होइतला ऑटोमेटिकली बेनामी इन्वेस्टमेंट गुडा कमी गला बेनामी इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस्ड बुझिला बेनामी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बूस्ट टू गवर्नमेंट रेवेन्यू मध्यम बढ़िला ऑटोमेटिकली इंप्रूव्ड कंप्लायंस एंड स्ट्रेटजी ऑफ कंप्लायंस गुडा को मध्य इंक्रीज हे गला कोन कहले कंप्लायंस स्ट्रेटजी कंप्लायंस मध्य इंक्रीज हैला नेक्स्ट आसे जीएसटी नाउ कहली मु इनडायरेक्ट टैक्स को इंटीग्रेट करला एटा बुझी पाले समस्त एटा बुझिला समस्त को आई होप सो एवरीवन इज क्लियर ऑन अ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट तापर इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करिया पई ताको मिसई दे के सब्ज्यूम कर दे के सब गुडा को आनिला कोन ना जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूपीए सरकार सॉरी एनडीए सरकार आको आनिले एंड दिस इज बेस्ड ऑन वैट चल जो ससन ना पढिया पडियो परीक्षा अछि माने परीक्षा भाई पढिया पडियो आ किछ उपाय नै यू डोंट हैव सेकंड ऑप्शन न पढिले क्वालिफाई करियोनी योर कॉम्पिटिटर्स आर रीडिंग बुझियो तो कॉम्पिटिटर पाठ पढुचंदी कॉम्पिटिटर प्रिपेयर होचंदी एटा भाबी कि पढ यदि एग्जाम क्वालिफाई करिया नै देन यू कैन गिव अप छाड़ दे पारियो एग्जाम क्वालिफाई करियार अछि पढिया पडियो मोटिवेशन निजको निजे मोटिवेट करिया पडियो ना ये छोट परीक्षा किछि वन डे नै जे तुमको आउ के आसीबो जने गप कहि गीत कहि मोटिवेट करियो ना निजको निजे मोटिवेट करिया पडियो अदरवाइज ये परीक्षा क्वालिफाई करि परियो एते बड़ परीक्षा एते लंबा परीक्षा जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल एसे बहुत पाठ अछि आ कइच कतरे गले पाठ भी सरीबनी so depends on you decide समस्त adult you can decide you can take decision for your on your of your own you decide what to do and what not to coming back to the gst हम देखले सब indirect tax गुडा को से कोन कला ना सब्ज्यूम कर दे कि गोटे आनिला gst goods and service tax बोली हम जा तो एडी मन को क्वेश्चन कोन से पचारिबो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऊपर एटी तीनटा मु इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहउछि पॉलिटी रे भी इनफैक्ट आको पढिबे आर्टिकल 246 क्लॉज ए आर्टिकल 269 क्लॉज ए आर्टिकल 279 क्लॉज हैला 246 ए 269 ए 279 ए ये तीनटा आर्टिकल पॉलिटी पढिला बेला आको पॉलिटी पढिला बेला आको भलो भाबरे बुझिबे ये कौन कहया चाहूँ ये कुछ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू हैव कॉन्करेंट पावर मींस बोथ द गवर्नमेंट्स दे कैन फॉर्मुलेट लॉ के ना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट नाउ 269 क्लॉज ए कौन कहूची ना ये कहूची इंटरस्टेट ट्रेड इंटरस्टेट माने गोटे स्टेट रो आ गोटे स्टेट सेठी जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से जगह रे जीएसटी के लेवी करियो इट इज लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट Now 279A empowers the President of India to constitute GST Council. Now 279A is important because of the GST Council. Now kiye karibe GST Council? A GST Council has to be constituted by the President. GST Council has to be constituted by the President. एतिकी जिनस हमको मन रखियार अछि. Next. Now ये जो GST पाई चारिटा separate act आसिला. कौन कहले जीएसटी पाई चारिटा सेपरेट एक्ट आसला कौन ना सेंट्रल जीएसटी एक्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट द जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट एंड द यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट मन रखिबे चारिटा सेपरेट एक्ट आसला जोटा मिसी के हमर हला कौन जीएसटी एक्ट
बुझिला जीएसटी स्टेट टैक्स कौन कौन को टैक्स एटी सब्ज्यूम होइचन देखो सेंट्रल टैक्स किए ना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी additional duties of excise duty levied under the medicinal and toiletry preparation service tax central surcharge central sales tax ये सब मिसी गले ना स्टेट टैक्स रहले के ना स्टेट वैट सेल्स टैक्स परचेज टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स ऑक्ट्रोय ड्यूटी टैक्सेस ऑन लॉटरी ये सब रहले का भितरे ये सब रहले स्टेट टैक्स भितर हैला देखो ये नुआ स्लैब आसी कोन 0% 5% 12% 18% 28% 0% रे रहला कि ना जूट फ्रेश मीट ये सब रहले फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स फ्लोर बेसन ब्रेड 5% रैव कैश्यू नट्स जोटा रिसेंटली एडेड हेती जहां पर क्वेश्चन पचरा जाय परिबो 12% रे के रहला ना एक्सरसाइज बुक्स नोटबुक्स पेंसिल शार्पनर करेक्टिव स्पेक्टाकल्स ये सब गुडा डायग्नोस्टिक किट 18% रहिला रिसेंटली के ना काजल पेंसिल स्टिक्स सेट टॉप बॉक्स फॉर टीवी सीसीटीवी एल्युमिनियम फॉइल कंप्यूटर मॉनिटर्स 28% को ना पान मसाला कैफे एरिया बेवरेज लॉटरी अनऑथराइज्ड लॉटरीज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट 3% रहिला को ना गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम पर्ल ज्वेलरी ऊपर 0.25% रॉ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन गोल्ड ऊपर रहिला केतना 3% दिख पड़थुएट समस्त है ना दिस इज द स्लैब नाउ ये न्यू स्लैब ऊपर से तुम क्वेश्चन पचारि पारे कोटा न्यू स्लैब रे व्हिच इज इंक्लूडेड एंड सबुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोड पचारियो जानि था गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम पर्ल ये जो 3% स्लैब इज इंपोर्टेंट नाउ 3% पर 28% और 18% इज इंपोर्टेंट फॉर यू हैला तले टैक्सेशन ऊपर जहां इंपोर्टेंट सब पार्ट गुडा कवर कर दे कोन कहली टैक्सेशन ऊपर जो गुडा को जते इंपोर्टेंट पॉइंट सब गुडा कवर रेगला किछि क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम एनी डाउट आज रो क्लास बुझियला बोला रे जो को तीनटा जो टैक्स कहली प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव सेटा बुझियला जोटी टैक्स रेटटा फिक्स्ड रहउची त को टैक्स कहउची जोटी टैक्स रेटटा फिक्स्ड रहउची त कोन कहउची टैक्स रेट फिक्स रहले त कोन कहउची दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव जोटी टैक्स रेटटा बढ़ुची कोन कहउची ताको देखो एट देखैला बुझैली मन पड़े एटा प्रोग्रेसिव टैक्स रेट बढ़िले कमिले रिग्रेसिव सेम रहिले प्रोपोर्शनल वेरी गुड रूपश्री प्रोपोर्शनल रे सेम कांस्टेंट रोच है ना ओके सेस और सरचार्ज भीतर डिफरेंस कोन को मते गोटे सेस रो एग्जांपल देला मते गोटे सेस रो एग्जांपल देला एजुकेशनल सेस वेरी गुड ना आ गोटे एग्जांपल किछि एजुकेशन सेस पर आ किछि एग्जांपल
स्वच्छ भारत सेस वेरी गुड स्वच्छ भारत वाला नाउ इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम लोक ऊपर पड़िले को टैक्स कहूजे इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम लोक ऊपर पड़िले को टैक्स कहूजे सेम लोक ऊपर पड़िले डायरेक्ट टैक्स वेरी गुड डिफरेंट लोक ऊपर पड़िले if on different person then indirect tax if on different person then ताले बुझी हला हां प्रोफेशनल टैक्स ता मैक्सिमम केते परसेंट काटी हबो केते टंगा काटी हबो प्रोफेशनल टैक्स ता मैक्सिमम केते टंगा मैक्सिमम केते टंगा प्रोफेशनल टैक्स एग्रीकल्चरल टैक्स ता के काटी सेंट्रल गवर्नमेंट और 2500 टंगा ठीक अछि एग्रीकल्चर टैक्स ता के काटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट इनकम टैक्स ता केबे आसिला इनकम टैक्स केबे आसिला स्टेट वेरी गुड रूपश्री गिरिजा करेक्ट इनकम टैक्स केबे आसिला इक्वलाइजेशन लेवीटा केबे आसिला yes income tax 1860 to compensate after the जो loss is तुम्हारा in उधर to compensate loss in the sepoys mutiny okay last question equalization levy ताले कौन देखिले आज क्लास रो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आउ कौन देखिले टाइप्स ऑफ टैक्स है ना कौन देखिले टाइप्स ऑफ टैक्स सिपाही विद्रोह करेक्ट चलो ठीक अछि सब डिफरेंट टॉपिक पढिले आज क्लास रो एतिक पढि के आसन आ जहा देखियो नेक्स्ट क्लास that's all for this session thank you good night now every day 9 pm 9 to 10 pm economics प्रत्येक दिन 9 ରୁ 10 ଟା economics next week start हो monday class नहीं republic day ପାଇଁ on tuesday you have a class tuesday onwards will continue ठीक है that's all for this session thank you good night